Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Ba, Hare Ba. Jaya Vishnu Padma Parivrajakacarya Astotha Satat Systematic Divine Grace ISKCON Faridabad Shri 𝒍𝒂𝒚𝒔 Vinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jaya Vishnu Padma Paramahamsa Parivrajakacarya Astotha Satat Systematic Divine Grace Shri Bhaktivedanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Si Kahau Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhara Sivasada Si Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Si Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapadam Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jaganapuri Dham Ki Jai. Gangamai Yamunamai Ki Jai. Simata Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai.
𝒍𝒑𝒂𝒏𝒕 Nitai Gaur Premanande. Our glory is to the sum of devotees. Our glory is to the sum of devotees. Our glory is to the sum of devotees. Our glory is all glory to the Gaur and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Sarasatim Vyasa Tato Jaya Mudirayat Nasta Payesvabhadesu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavaiti Naistiki. So, welcome everyone to this segment of the morning programs. तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये जो प्रातःकालीन कार्यक्रम होता है उसका ये जो भाग है उसमें। So today, instead of the regular reading from the Bhagavatam, I want to share some things about the victory of Lord Ramachandra. तो आज हम भगवान श्री रामचंद्र के विजय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। Lord Ramachandra advented to demonstrate ideal leadership for a sustainable future. For sustainable future. तो भगवान श्री रामचंद्र अवतरित हुए ये दिखाने के लिए कि एक नेता है किस तरह उसको आइडियल होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए ताकि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। And if you read the Ramayana, you see that Lord Ramachandra, in the process of trying to, even before he could be coronated, he was the heir to the throne, but before he could be coronated, imagine that let's take a company for instance, and you're supposed to be the chief executive or the director of the company in the next election, next month. And there was some disarray. They sack you from the company. And you say, thank you very much for this wonderful opportunity. तो भगवान रामचंद्र अवतरित होते हैं और बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं राजा बनने से पहले भी। तो जरा अनुमान लगाइए कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और उस कंपनी में आपको CEO या डायरेक्टर का पद दे दिया गया है और आप अगले ही महीने ज्वाइन करने वाले हैं और आप वहाँ पहुँचते हैं और पता चलता है कि सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है और आप जाकर बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे नहीं लिया, जैसे भगवान रामचंद्र ने बोला। So look at it. I mean, the story of Lord Ramachandra is just full of lessons for us. Because as the Supreme Personality of Godhead, as the Supreme Lord, who had advantage to teach how to lead society, he was attacked by his own stepmother. Supposed to say this. The closest person to you attacked you. The person you should love for the rest of your life attacked you. You want to become the king. And she said, get out of here. Not just get out of here. Send him to prison. You're going to the forest. तो भगवान रामचंद्र दर्शाते हैं किस तरह आदर्श जीवन जिया जाता है और विशेषता नेता जो है वो आदर्श होता है
तो जरा अनुमान लगाइए कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, आपकी अपनी ही सौतेली माँ है, उससे पूरा जीवन बहुत प्रेम करते आए हैं, और अकस्मात एक दिन वो आपको बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, और ना केवल निकल जाओ, उस जेल भेज देती है। भगवान रामचंद्र को तो वन में भेज दिया गया। Now we hear this story every year. Perhaps those who are going to for Ram Kathas, they hear it every here and then. But what are the social implications of Ram's Leela? What do we learn from Ram's Leela? Is life so easy? Life on this planet, is it so easy? If even you're born in the richest family on the planet, and you are supposed to take over from your father's riches. In India, it's very common. Parents, they work so hard. Why? For their children. They leave a legacy behind, so much wealth behind. You are supposed to take over all of your father's resources. And somehow or the other, they check you out of the family. You're deprived from acquiring those resources. That was exactly what Ramachandra faced. रामचंद्र की जो कथा है, राम कथा, वो तो हम हर वर्ष सुनते हैं और हम जानते हैं कि किस तरह उनको निकाल दिया गया, वन भेज दिया गया। परंतु इससे सामाजिक स्तर पे क्या शिक्षाएं हम ग्रहण कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि जैसे एक ये जो संसार है, इस पर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, अपार धनी व्यक्ति हो, राजा का भी पुत्र क्यों ना हो, और आपको अपने पिता की जायदाद मिलने वाली है, और एकदम से आपको परिवार से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। भारत में तो बहुत कॉमन है कि पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, परंतु एकदम से आपको उठाकर परिवार से बाहर फेंक दिया जाता है। So, a kingdom, a Ayodhya kingdom, is not just some company in Delhi. It's a kingdom. और जब राज्य की बात करें तो केवल एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो तो राज्य है पूरा। And he was the heir to the throne. But there were unfavorable winds that blew him no good. और बहुत बड़े राज्य की बात है और रामचंद्र को राजा बनाने वाले थे, परंतु ऐसी हवा जो कि वास्तव में विरुद्ध गति में जाती है, विरुद्ध दिशा में जाती है, उसने एक तरह से दूर कर दिया उनको। Ram was very dear to his father, and therefore when this issue came up that his father has to banish him to the forest to deprive him from taking over or the throne, that caused the father tension. और पिता के पास जब ये बात पहुंची और पिता के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति थी कि उनके प्रिय पुत्र को वन भेजा जा रहा है और यहाँ वो उसे राजा बनाने वाले थे, तो इस दुविधा में उनको हाइपरटेंशन हो गया। He fainted a number of times. और कई बार मूर्छित होकर गिर पड़े। But he was obliged. He has to follow up because he had promised the wife that he will give anything that she asked for, any boon that she asked for. And she said, wait, at the right time, I will ask for the boon. At the right time, I will ask for the boon. तो हालांकि पिता की व्यक्तिगत रूप से ये परिस्थिति थी कि बार बार बहुत ही दुख की, शोक की अवस्था में थे, परंतु साथ के साथ उन्होंने पहले प्रण लिया हुआ था, वचन दिया हुआ था, अपनी ही पत्नी को वचन दिया हुआ था कि मांगो क्या मांगती हो, जो मांगती हो दूंगा, और पत्नी ने कहा था कि जब सही समय आएगा तो मांगूंगी। In the Vedic culture, when you promise your wife something, you cannot go back. तो वैदिक प्रणाली में जब अपनी पत्नी को आप कुछ वचन देते हैं तो आप उससे पीछे नहीं जा सकते। We are supposedly practicing Vedic culture.
तो हम लोग तो वैदिक प्रणाली का पालन करना चाहिए, हमें लगता तो है कि हम करते हैं। So, Vedic culture is not so easy. तो जो वैदिक संस्कृति है वो इतनी सरल नहीं है, Because Vedic culture is supposed to enable us to act favorably in an unfavorable circumstance. तो वैदिक संस्कृति के अनुसार जीना सरल नहीं है, परंतु वैदिक संस्कृति है क्या, वो हमें शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है कि सही तरीके से कार्य करें दुर्गम स्थिति में, जो कि ऐसी स्थिति जो हमारे लिए प्रतिकूल स्थिति में अनुकूल रूप से कार्य करें। And that is exemplified by King Dasharath. और ये राजा दशरथ के व्यक्तित्व से हम देख पाते हैं। He could have told the wife, I love Ram so much. This, your request? No, I cannot do it. वो अपनी पत्नी को कह सकते थे कि बहुत हो गया, ये जो तुमने मांग की है ये मैं नहीं कर सकता, जाओ, नहीं करता। I mean, it's like your wife comes to ask for something, and you say, the thing is like, you feel that this is too much. And you want to prove yourself that I am the controller. I am not henpecked. I am not controlled by the woman. This one you're asking is too much. Hey, Mataji, this is too much now. तो पति है, पत्नी को वचन देता है, और जब पत्नी आती है और पति बोलता है, पति को लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही है, और वैसे भी वो चाहता है कि कोई ये ना सोचे कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, तो इसलिए पत्नी के सामने आकर बोलता है कि हे, जो मांग रही हो बहुत ज़रा बड़ी मांग है, मैं नहीं करता पूरी। So, the humility of Dasharath, the compassion of Dasharath, the culture of participative leadership of Dasharath is something that modern society needs to learn from. तो जो दशरथ है, महाराज दशरथ, उनका जो स्वभाव, उन्होंने जो जिस तरह उन्होंने कार्य किया इस परिस्थिति में, उससे हम सबको शिक्षा लेनी है। So, he was not happy, but he subscribed to the request. He was not pleased, but he subscribed to the request to maintain what? His dignity. Dignity. डिग्निटी का हिंदी पता है किसी को? डिग्निटी, शांत नहीं, डिग्निटी। तो महाराज दशरथ हैं, वो स्वयं बहुत दुखी थे, कष्ट में थे, परंतु फिर भी जो वचन दिया था अपनी पत्नी को वो पूरा किया। क्यों किया? केवल इसलिए कि अपनी सत्यता, गरिमा, अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्यता और गरिमा को बनाए रखने। So, anyway, we can go on talking about the background and even forget the main stuff. So we find out the Mahabharata is full of episodes or narratives that could help us to lead and manage our communities, our families, our societies, our nations in a very favorable way for the benefit of all. तो महाभारत है वो ऐसी कई कथाओं से भरा पड़ा है जिसके द्वारा हम शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व को कैसे अनुकूल भाव से चलाया जा सके। Because we find that the pivot of Mahabharata's action, the pivot or the fulcrum of Ramachandra's actions were all based on dignity. तो महाभारत को लें या रामायण को लें या भगवान या महाराज दशरथ को लें,
ये जो भी वहाँ पे कथाएं हैं और जो भी वहाँ पे बड़े बड़े लोग कार्य करते हैं वो सब गरिमा के ऊपर आधारित हैं। So when Lord Ramachandra was deprived of the kingdom by someone very dear to him, his stepmother, the person who is going to hurt us the most is someone very close to us. तो महाराज दशरथ को ये दुख मिला एक ऐसे व्यक्ति से, और भगवान रामचंद्र को ये दुख मिला ऐसे व्यक्ति से जो बहुत ही नज़दीक था उनके। तो ये भी एक शिक्षा है कि हमें कष्ट मिलता है उससे जो हमसे बहुत नज़दीक है। So he left, but Sita wouldn't part, and she joined him to the forest. Lakshmana wouldn't part, he joined him to the forest. Again we see the intensity of love that exists between two individuals determines how they provide emotional support for the other party when the other party is in difficulty. और फिर भगवान रामचंद्र वन की ओर गए, और जब वन की ओर जा रहे थे तो उनके साथ सीता मैया ने बोला मैं भी जाऊंगी, वो भी गई। लक्ष्मण जी ने बोला मैं भी जाऊंगा, वो भी गए। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से कि जब एक व्यक्ति है वो बहुत ही अधिक ऐसी स्थिति में है कि उसको दूसरों का सहारा चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं प्रेम की प्रगाढ़ता, दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम की प्रगाढ़ता, ऐसे संबंध कि अपनी परवाह ना करते हुए दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जैसे सीता मैया लक्ष्मण जी गए भगवान रामचंद्र के साथ। And what about Bharat? Bharat even condemned his mother. Sometimes our parents may do something, that is not ordained by social norms. We should support them because they are parents. Blood is very thick, thicker than water. But Bharat was not like that. He condemned what the mother did. He condemned it completely. He wanted to disown the mother. तो ऐसा भी होता है, भरत से हम शिक्षा ले सकते हैं, भरत महाराज से। उन्होंने अपनी ही माता को नकार दिया। उनका बहुत कई बार ऐसे होता है कि हम होते हैं परिवार में, समाज में, और माता पिता बहुत ही निंदनीय कार्य करते हैं, परंतु क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है हम माता पिता जो भी करते हैं उसमें साथ देते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते, उसको अस्वीकार नहीं करते। पर भरत ने अपनी माता का बहुत खंडन किया। So today is not just a religious day for Vaishnavas or for devotees, but all over India they are celebrating today because it's considered the emblem of victory over evil. तो आज का जो दिन है केवल वैष्णवगण नहीं मनाते, परंतु एक पर्व के रूप में, परंतु पूरे भारतवर्ष में सभी लोग इसको मनाते हैं। और आज का दिवस दर्शाता है जो बुराई के ऊपर विजय। Today is the end of Durga Puja, right? Yeah, I think yesterday. Yesterday or today? I'm not sure. So, what is important for us is the Leela that Lord Ramachandra enacted, that we are commemorating and celebrating today, the victory of Lord Ramachandra over Ravana. तो भगवान रामचंद्र की रावण के ऊपर विजय हुई आज के दिन, तो हम उसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। और दुर्गा पूजा भी कल या आज उसका अंतिम दिन है, दुर्गा पूजा का भी। So when Lord Ramachandra went to the forest, there were a lot of things that took place. Sita was, false Sita was kidnapped. और जब भगवान रामचंद्र वन की ओर गए तो छाया सीता है वो भी उनके साथ गई। But to effect the drama or the Leela, it seems as if Lord Ramchandra was really dying for Sita, and so he went
out of his comfort zone to do everything possible to try to see that he regained her, or he redeemed her from the captors, which is. But all tended to have failed until he decided to make a deal with the monkeys and created a bridge across the ocean to Lanka, and then a fight between the Rakshasas and the troops of Ravana, of Ramachandra took place. और ये जो लीला रची गई, इसको एक स्वाभाविक और व्यवहारिक रूप देने के लिए भगवान रामचंद्र ने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो सीता महारानी के पीछे पूरा ध्यान वहीं पे है, उनसे प्रेम करते, मरे ही जा रहे हो सीता महारानी के लिए। तो जब सीता महारानी का अपहरण हुआ तो भगवान रामचंद्र अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए और जो कुछ कर सकते थे वो किया कि किस तरह सीता मैया को रावण के चुंगल से छुटाया जाए। और उसके बाद वानरों की सेना साथ में जुड़ी भगवान रामचंद्र के, फिर वो ब्रिज बनाया गया जिसके माध्यम से लंका के ऊपर गए और लंका के ऊपर विजय प्राप्त की, लंका पहुँचे और फिर वहाँ पर रावण की सेना के साथ युद्ध किया और फिर विजय प्राप्त की। Again it shows how a man should be in a position to protect the wife, and if the wife is in danger, he should be able to rescue the wife from the danger. And if he's not going to be able to do that, he should be ready to die for that cause. तो यहाँ पर फिर से एक शिक्षा मिलती है कि जो पति है उसको पत्नी को सदैव संरक्षण देना चाहिए, और ख़ासतौर पर जब पत्नी है वो किसी मुसीबत में फंसी हो तो पति को पत्नी को संरक्षण देना चाहिए, और यदि वो नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है तो उसे वास्तव में उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। So when the fight eventually ensued, there was a lot of casualties. And Lord the Rakshasa king of Lanka, Ravana, he sent troops of Rakshasas to go and fight. Eventually he sent his own son, Indrajit. And Indrajit was slain by Lakshman. And he was so devastated. और इस तरह से जब युद्ध हुआ तो भयंकर युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं से कई सैनिक थे और कई लोग मारे भी गए, और रावण ने अपनी राक्षसों की कई सेनाएं भेज दी राम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, और अपने ही पुत्र इंद्रजीत को भी भेज दिया, और लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत मारा गया। और जब इंद्रजीत मरा तो रावण बहुत ही शोक में आ गया। But the killing of Indrajit was the springboard that propelled Ravana to go to the war front. He thought, what? My son has been killed by a mortal. All right. He loves his wife, Sita. Let me go and kill Sita first. Sita was captured. She was in the gardens. He declared, let me go and kill Sita. This is his object, this is Lord Ram's object of love. If I kill Sita, he will be wicked. He will be devastated. So first, let me go and kill Sita. तो वास्तव में जो इंद्रजीत का मृत्यु हुई तो उसने एक तरह से स्प्रिंग का कार्य किया इस पूरी लीला में, और रावण बहुत ही क्रोध में आ गया, शोक में था और क्रोध में आ गया कि क्या मेरा बेटा मारा गया इस युद्ध में। और राम ने, क्योंकि वो सीता से प्रेम करते हैं, तो सीता के प्रेम के कारण मेरे बेटे को मारवा दिया, तो जब मैं इनकी पत्नी को यानी सीता को मार देता हूँ। So he took up his sword and went advancing towards the garden. तो उन्होंने तलवार निकाली रावण ने, और जहाँ सीता मैया जिस गार्डन में थी उसकी तरफ गए, वो बगीचे की तरफ। And one of his ministers, who knows the name of that minister, he came and dissuaded
Ravana from embarking on that vicious act. और फिर जो रावण है वो तलवार निकल गए सीता मैया का वध करने के लिए, परंतु इसी बीच में रावण के ही एक मंत्री ने आकर रावण को रोका, बोला नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना. He intercepted Ravana and told him that, see, you are known all over the world. You are a very powerful person. You defeat even the devatas. This is an ordinary mortal woman. If you go and kill this woman, you have destroyed your reputation. तो रावण ने भी पहले ही सोचा था कि एक छोटा सा एक साधारण मनुष्य राम, उसने मेरे बेटे को मरवा दिया. और अभी रावण का मंत्री भी यही बात बोलता है रावण को, देखो तुम इतने बड़े राजा हो, इतने शक्तिशाली हो, तुम तो देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा यश तो सब जगह फैला हुआ है, और तुम एक साधारण नारी को जाकर मारोगे, इससे जितना भी तुमने यश प्राप्त किया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा. If you kill her, you are a loser anyway. The purpose of your kidnapping this woman is that you lost after her, you want to enjoy her. So if you kill her, what do you gain? और वैसे भी इसको मारोगे तो तुम तो हर तरह से हारे ही हो, क्योंकि तुमने इसका अपहरण किया था इसको भोग करने के लिए, और अब मार दोगे तो अपहरण भी नहीं कर पाए और मार दिया, और मार करने से यश है, तो तुम्हारी तो हार ही हार है. So go and kill Ram and Lakshman, and naturally, this beautiful woman will be yours, because she will become inclined towards you, because her husband has been killed. तो इसलिए अच्छा यह है कि जाओ राम को मारो, लक्ष्मण को मारो, और जब सब मारे जाएंगे तो जो सुंदर स्त्री है सीता, ये स्वाभाविक रूप से तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि उसका पति तुम्हारा जल चुका है. Other people try to stop Ravana from this intention, but he didn't listen. But this very minister, his words were so penetrative into Ravana's heart that he listened, he yielded to his advice. तो और कई लोगों ने रावण को सलाह दी, नहीं ऐसा नहीं करो, युद्ध मत करो, बिल्कुल सही नहीं है, पर ये जो विशेष मंत्री था, इसके शब्द रावण के हृदय में ऐसा छूते थे कि उसकी बात को पूरा स्वीकार किया, और जैसा उसने बोला वैसे ही किया. In the very cultures, there were always wars, but killing of women and children was forbidden. तो पहले के समय में स्त्री का और बच्चों का वध जो है वो मना किया गया, तो उसको नहीं कर सकते थे. So we find that the opposite is what is happening in modern society. So Ram then called his Rakshasas and said, okay, let's ready for war. Let's go and kill this Ram and his soldiers. So the Rakshasas, they jump up, they say joy, they started praising Ravana. This is a very right decision. Yes, let's go. तो रावण ने अपने सब राक्षस सैनिकों को इकट्ठा किया और बोला चलो आक्रमण करते हैं, राम लक्ष्मण के ऊपर, उनकी सेना के ऊपर विजय प्राप्त करके वो हराएंगे. और जैसे ही बोला सारे जो राक्षस सैनिक थे वो उछल पड़े, बोले जय हो, चलो चलते हैं. So we have the military phalanx of Lord Ramachandra. They were monkeys. And what was their weapons? What was their guns? What were their missiles? Stones and trees. Stones and trees. They uproot trees and they use stones. और जो राम की सेना के सैनिक थे वो कौन थे? बंदर थे. तो बंदर के पास कौन सी पिस्तौलें थी, कौन सी बंदूकें थी, कौन से मिसाइल्स थे? उनके पास तो पत्थर थे और पेड़ थे. The demons, these Rakshasas, they had all types of weapons, mazes, marks, so many things they were carrying.
And so they confronted the monkeys, and a fight ensued. But very easily, these monkeys finished the whole battalion of the Rakshasas on the battlefield with stones and trees. तो रावण के जो सैनिक राक्षस सैनिक थे उनके पास तो तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र थे और पहुंचे युद्ध करने के लिए। वहाँ सामने बंदर थे और ये युद्ध हुआ। तो आश्चर्य की बात यह है कि जो बंदर हैं उन्होंने बहुत ही आसानी से पत्थरों और पेड़ों के माध्यम से राक्षसों की पूरी सेना को मार गिराया। Ravana became furious and he decided to go and face Lord Ramachandra himself. He went, he was passing through a field of pulverized soldiers or killed armies. So he went to the front. और जब ऐसा हुआ तो रावण ने सोचा मुझे ही खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो स्वयं भगवान राम की तरफ गया उनसे व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने के लिए। और ये जिस रास्ते से गया तो दोनों तरफ उसकी राक्षसों के सारे सैनिक मरे पड़े थे। So a fierce battle ensued, and it was not a simple thing. There were missiles. Ravana had so much of power. He had been endowed with some boons from, is it Lord Brahma or something? Shiva. Or Shiva. And no mortal could kill him, you know. और फिर रावण निकला और रावण और राम का बहुत घमासान युद्ध हुआ। और रावण स्वयं में बहुत अधिक शक्तिशाली था क्योंकि उसके पास बहुत अधिक वरदान थे जो कि शिव जी ने उसको दिए हुए थे। तो बहुत शक्तिशाली था। Power is good, but power intoxicates. तो पावर यानी शक्ति है वो अच्छी भी है, पर शक्ति है किसी को पागल भी कर देती है। In Bhagavatam, Lord Krishna was instructing Uddhava in the Uddhava Gita. He was instructing Uddhava about the mystic cities, the different type of mystic cities. And ultimately, Lord Krishna's advice to Uddhava was that, see, these mystic cities, to be lighter than the lightest, you can fly in the air. To be smaller than the smallest, you can pass through a stone wall without a crack. All of these cities, they are really not good for the devotees because they can distract the devotees significantly from the path of the. तो श्रीमद् भागवतम में जो उद्धव गीता प्रसंग है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को शिक्षा देते हैं और बोलते हैं देखो ये योगिक सिद्धियाँ हैं, अलग अलग तरह की सिद्धियाँ हैं। कोई किसी को कितना हल्का कर देती है कि वो हवा में उड़ सकता है, कोई किसी को ये सिद्धि प्राप्त होती है कि पानी के अंदर जा सकता है। परंतु जितनी भी योगिक सिद्धियां हैं ये भक्तों के लिए अच्छी नहीं है। Ram is the Supreme Lord, but Ravana was thinking Ram was immortal. तो भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम राम स्वयं भगवान है, परंतु रावण सोच रहा था ये तो एक साधारण मनुष्य है, पुरुष है। And because Ravana was invisible, unconquerable, he thought, this is just an ordinary mortal. He may be powerful, but I can finish him up. और क्योंकि रावण के पास इतनी शक्तियां थीं कि उसके ऊपर वास्तव में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था और वो अमर भी था एक तरीके से, तो इसलिए उसने सोचा कि ये तो मनुष्य है, ये मेरा क्या कर पाएगा। What's the problem here? Overconfidence. परंतु क्या समस्या थी रावण के साथ? ओवर कॉन्फिडेंस। And the background of all of this scenario, this narrative, is what? Lost. Ravana was lusty, and that caused his death. और मूल आधार क्या था इस पूरी समस्या का? काम। तो रावण में काम वासना थी,
इसके कारण ये सब कुछ हुआ। In the Bhagavad Gita, Arjuna asked Lord Krishna, what is it that forces a man to act even against his better judgment? तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या ऐसी शक्ति है भी एक व्यक्ति से गलत कार्य कराती है। And so Krishna submitted to Arjuna Kama Isha, Krodha Isha, Rajaguna, Tamobhava, Mahasano Mahapatma, Vidina, 𝐿IKE। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि काम है, क्रोध है, यही वास्तव में ऐसे शत्रु हैं जो एक मनुष्य से गलत कार्य कराते हैं। So this is a typical case, typical example is this case of Ravana. He wanted to enjoy. He had wives, and lust is insatiable. You cannot satisfy lust. It's like putting ghee, trying to use ghee to extinguish fire. Does it work? Huh? If you try to use ghee to extinguish a burning flame of fire, you simply feed the fire more. You can't extinguish it with ghee. So that is what lust does. The more we try to satisfy lust, the more we find that we are running into problems. In the case of Ravana, he had many beautiful wives. He was not satisfied with that. He wanted Sita too. And that caused his death. तो ये काम और क्रोध हैं, ये रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं रावण को, तो वो उसके पास काम वासना थी, सीता मैया को भोगना चाहता था। ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी अपनी स्वयं पत्नियाँ थीं, बहुत पत्नियाँ थीं, बहुत सुंदर पत्नियाँ थीं, परंतु यही काम का स्वभाव है। कभी उदाहरण के लिए जलती हुई अग्नि में घी डाला जाए तो क्या आग बुझ जाएगी? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। अग्नि में जब भी घी डालेंगे तो आग और बढ़ जाएगी। यही काम का स्वभाव है। तो हालांकि इतनी पत्नियां स्वयं की रावण की थी, परंतु काम वासना थी। तो lust is not only running for sex. Lust entails also walking or pursuing, getting into adventures that ordinarily you may not be able to achieve because you don't have the credentials. You don't have the resources. You don't have the credentials, but you say, I want this. तो काम या काम वासना की बात करते हैं तो केवल ये शारीरिक वासना नहीं है जो पुरुष स्त्री में होती है, परंतु काम का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज के लिए बहुत अधिक प्रयास के लिए लग जाना जो वास्तव में प्राप्त करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए आपके पास योग्यता नहीं है या साधन नहीं है। An example of that is someone who wants power. उदाहरण है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक शक्ति चाहता है। Power is good, but power could be very destructive if you don't have the skills to lead your nation or your country or your community. तो शक्ति होना अच्छी बात है, परंतु वो शत्रु बन जाएगी यदि आपके पास योग्यता नहीं है उस शक्ति को सही तरीके से उपयोग कर पाना समाज के लिए या देश के लिए इत्यादि। So today's celebration is a commemoration of the slaying of Ravana on the battlefield, where Lord Ramchandra killed the 10-headed Ravana. Ravana is not just a common Rakshasa. He had 10 heads. तो आज का जो उत्सव है वो इसलिए है कि भगवान रामचंद्र ने रावण नाम के रावण जैसे बहुत बड़े राक्षस का वध किया, और कोई रावण साधारण राक्षस नहीं था, उसके 10 मुख थे।
So here is a typical case where Ram showed his social responsibility to be able to rescue his wife from captivity. The wife was in difficulty, and the wife is in difficulty. The husband's position is to see that they placate the wife or appease the wife or rescue the wife from that difficulty. And it entails a lot of things. Just to marry is one thing, but to really be a caring spouse means a lot of things. और एक विशेष शिक्षा इस लीला से भी मिलती है कि एक पति को अपनी पत्नी को संरक्षण देने के लिए और पत्नी किसी कठिनाई में हो तो किसी भी हद पर जाकर उस पत्नी को वहाँ से निकालने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए पति को तत्पर रहना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। विवाह कर लेना एक बात है, परंतु एक प्रेम और संरक्षण देना ये बहुत विशेष और बड़ी बात है। To say I love you is very easy. Anybody can say I love you. यह कह देना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, किसी को बोल सकता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। But some people even never say I love you. But some people never even say I love you. और कुछ लोग तो कभी बोलते भी नहीं कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ। But in either case, they have, especially spouses, have to be Neo Mini Ramachandra. Neo Mini Ramachandra. Modern, small Ramachandra. Being protective. तो चाहे कोई किसी को बोले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या ना भी बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, परंतु जो भी पति हैं उनको वास्तव में आधुनिक युग में एक तरीके से छोटे छोटे रामचंद्र होना होगा कि अपनी पत्नी को संरक्षण दे सके। Because your household is under your care, and understanding, even for the devotees, is even more challenging because we understand Mama 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔, 𝒍𝒑 Sanatana. Everyone is part and parcel of Krishna. It means that the people around you, your household, your spouse, your children, they are all part and parcel of Krishna. So you need to protect them. And therefore the responsibility for a devotee, householder, is even more demanding. तो विशेष रूप से ये भक्तों के लिए है, तो जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए वैसे भगवान गीता में बोल ही रहे हैं कि तुम सब मेरे अंश हो, तो इसको समझना और इसको लागू करना एक गृहस्थ भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। वो अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता इत्यादि को संरक्षण दे सके। Ramachandra defeated, slain Ravana, although Ravana was so powerful. But it wasn't easy. There was a fierce battle. And in a similar way, for us to achieve our goals, it might not be easy, but if we depend on Krishna and Krishna Guru and assembled devotees, we pray for their mercy, even the most difficult thing could be very easy to achieve. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रामचंद्र तो स्वयं भगवान थे और उन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, परंतु रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना भी सरल नहीं था। उनको भी बहुत अधिक घमासान युद्ध लड़ना पड़ा। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको संपन्न कर पाने के लिए, विजयी हो पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और गुरु कृष्ण और जो वैष्णव हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, उनके ऊपर निर्भरता की बहुत अधिक आवश्यकता है। और यदि ऐसा करेंगे तो फिर असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। So if you read Ramayana very scrutinizingly, you find out Lord Ramachandra is the epitome of justice. Is the epitome of justice. He stood for justice. तो हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र हैं वो न्याय के प्रतिनिधि हैं। For instance, when he took over after the expiration of his
of the burning to the forest. He conquered, he slain Ravana, and then reclaimed his wife. When he came back to Ayodhya to take over the throne, in his rulership, we find one striking situation. He treated each and every embodied soul in his kingdom in the same way. He treated even the dogs. He gave audience to even dogs. You know that? Yeah. I tell you a story. That was the case of a Brahmin. He was walking along the road, and there was a dog who was just lying on the road there. So he said, "Hey, get out." He was holding a stick, walking stick. He said, "Hey, get out." The dog didn't mind him. The dog did not mind the Brahmin. तो भगवान रामचंद्र हम देखते हैं वो सब के प्रति संभाव रखते थे, यानी कि कोई इवन कुत्ता भी हो उसके प्रति संभाव रखते थे। इसके पीछे एक कथा है। एक बार भगवान रामचंद्र के राज्य में एक ब्राह्मण जा रहा था, उसके हाथ में एक डंडा था और कुत्ता रास्ते में था, तो ब्राह्मण ने कुत्ते को बोला, हट, यहाँ से हट। कुत्ता नहीं हटा। What did the Brahmin do? He got offended. He hit the dog with his walking stick. So the dog had a bleed. तो ब्राह्मण को क्रोध आया, उसे लगा कुत्ते ने मेरे प्रति अपराध कर दिया है, तो ब्राह्मण ने डंडा लिया और कुत्ते को मारा और कुत्ते के सिर पे चोट आई, थोड़ा खून आया। But you know what the dog did? और आप जानते हैं कुत्ते ने क्या किया? Who knows what the dog did? कौन जानता है कुत्ते ने क्या किया? Anybody? Okay. Yes, you can tell us. Yeah. You want to make a report? फिर कुत्ता रिपोर्ट लिखवाने चला गया भगवान राम के पास। A dog. He went to the court of Lord Ramachandra. कुत्ता भी भगवान राम के दरबार में चला गया। Stood by the gate. और दरवाजे पे खड़ा हो गया। So Lord Ram, court was in session. He told Lakshman, go to the gate and bring anybody who is there who has a complaint. तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला कि जाओ गेट दरवाजे पे जाओ, गेट पे जाओ और देखो कोई भी वहां पर है शिकायत लेके खड़ा है तो उसको अंदर ले आओ। So Lakshman went there. He didn't see anybody. लक्ष्मण गए और कोई दिखा नहीं उनको वहां पर। He reported back. और वापस राम के पास आए और बोला कोई नहीं है वहां पर। Go back. और राम ने दोबारा And he told him, anybody you see there, if even is a subhuman, an animal. और राम ने कहा लक्ष्मण को कि जाओ दोबारा देखो और कोई भी हो, मनुष्य ना भी हो, कोई पशु भी हो, उसको भी लेकर आओ। See, leadership is a very difficult thing. तो लीडरशिप आसान बहुत कठिन है। And this story also tells us about the difficulties in leadership. और इस कथा से ये भी हम देखते हैं कि किस तरह की कठिनाइयां होती हैं एक नेता के लिए। So when Lakshman came back to the gate, he saw this dog bleeding, so he said, come. So he led the dog to the court of Lord Ramachandra. तो लक्ष्मण ने देखा कुत्ता खड़ा है, कुत्ते को खून निकल रहा है, तो लक्ष्मण ने कुत्ते को बोला कि आइए अंदर, और कुत्ते को लेकर आ गया, चले गए। Now, again, if you read the Ramayana scrutinizingly, you find one outstanding leadership style in the time of Lord Ramachandra, and that is participative leadership. और यदि आप रामायण को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि जो भगवान राम दर्शाते हैं लीडरशिप, वो है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यानी सब लोग मिल के कुछ चयन करें या निर्णय लें। We had, like what we have in modern day judicial system, he had a jury, people who were there
to decide, to support, and make some decisions. Not that he single-handedly, decides a case. जैसे आधुनिक युग में जुडिशियल सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति बस निर्णय कर लेगा, एक पूरा ज्यूरी होती है, वो डिसीजन लेती है. So when the dog came in, Lord Ramachandra asked, "What is the problem?" तो जब कुत्ता आया तो भगवान रामचंद्र ने पूछा क्या समस्या है. He said, "See my head, I'm bleeding. Some Brahmin hit me on my head with his stick. He asked me to leave the road. I ignored him, and he hit me with his stick, and I got this injury." तो कुत्ते ने बोला देखो मेरे माथे में चोट लगी है, खून निकल रहा है. तो मैं रास्ते में खड़ा था, एक ब्राह्मण आया, उसने बोला हट जाओ. मैं हटा नहीं, उसकी बात नहीं सुनी, तो ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा, उससे मुझे चोट लग गई. So the jury ordered for the Brahmin to come. और बोला कि जो उस ब्राह्मण को बुलाया जाए. So they asked, the Brahmin came, they asked him, the jury asked him, "There's a complaint against you. This dog said, this is what you did to him. You hit him on the head, and he's now bleeding. Is it true?" तो जब ब्राह्मण को बुलाया गया तो उसे पूछा गया, देखो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, शिकायत आई है, कुत्ते को तुमने मारा है, देखो उसको खून निकल रहा है, क्या सच बात है तुमने उसको मारा है? It's a Brahmin. Brahmin means truthfulness, stands for truthfulness. If even you have to die, you don't lie. And Brahmin said, "Yes, I hit him." और वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का मतलब सत्यवादी. ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता है, मरना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, सत्य बोलता है. तो ब्राह्मण ने बोला हाँ मैंने मारा. He said, "I was coming, he was lying on the road. I asked him to leave, he ignored me, so I hit him on the road." तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं आ रहा था और रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ था, मैंने बोला हटो, हटा नहीं, तो फिर मैंने उसको मार दिया. So the Brahmin was found guilty by the jury. तो ब्राह्मण को दोषी करार दिया गया. So then, in the legal system, there is something we call allocatus. What's your allocatus means that you asking someone is found guilty, then you ask, so what's your last statement? What have you got to say? Then in most cases they say, "Please be lenient with me. I beg the court, be lenient with me." तो जुडिशियल सिस्टम एक सिस्टम है कि यदि किसी को दोषी करार दिया गया है तो उससे पूछते हैं कि देखो अब तो आप दोषी हो, अब क्या किया जाए आपके साथ. तो फिर दोषी हाथ जोड़ के बोलेगा देखो जी मैं तो मेरे से गलती हो गई, मुझे बड़ी सजा न दी जाए, मुझे बख्श दिया जाए. Also, in Ram's jurisdiction, they had this concept of placating the victim, trying to see that the victim receives justice. So they asked the victim, they asked the dog, "Yes, we found him guilty. Well, before we pass the judgment, we want to hear from you. What will be appeasing to you? What is the best punishment for this Brahmin?" और भगवान रामचंद्र के राज्य में, दरबार में ऐसे होता था कि अब जिस तरह इस परिस्थिति में जब ब्राह्मण को दोषी बताया करार दिया गया है तो फिर कुत्ते से पूछा, देखो तुम्हारी शिकायत थी, हमने सुनी और उस पर कार्यवाही की और पता चला है कि ब्राह्मण जो है वो दोषी है, बिल्कुल सही बोला था तुमने, अब बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए इसको. You know what Mr. Dog said? और आप जानते हैं कुत्ते ने क्या बोला? He said, "Make him the president of such and ashram." So the members of the jury, they were wondering, they said, "What is this? This guy is a criminal. This is a brutal treatment, assault, occasioning harm, and he's saying we should promote this guy, this Brahmin." So they asked him, "Come on, can you explain what you mean? Because we do not understand.
traditionally, this guy should be punished. You were saying he should be promoted to be the president of an ashram. तो कुत्ते ने बोला, कुत्ते से पूछा गया क्या सजा मिलनी चाहिए इसको ब्राह्मण को, तो कुत्ते ने बोला इसको आश्रम का राष्ट्रपति बना दिया जाए। हैरान हो गए, ये क्या बात हुई, ये तो उसने ब्राह्मण ने तो तुम्हारे ऊपर वार किया था, दोषी करार दिया गया है, उसको सजा मिलनी चाहिए और तुम कह रहे हो आश्रम का राष्ट्रपति बना लिया जाए, तो कृपया बताओगे, समझाओगे इसके बारे में। Mr. Dog said, you know why I'm a dog now? तो कुत्ते ने बोला कि आपको पता है कि मैं कुत्ता क्यों हूं अभी? I was the president of such an ashram, and the sinful reactions I received from all of my community members, that's what made me to become a dog in this lifetime. This guy seems to be, he thinks he's smart. Make him the president of such an ashram, and we'll see his next life. तो कुत्ते ने बोला कि हाँ इसको राष्ट्रपति बना लिया जाए। क्यों, आपको पता है मैं कुत्ता कैसे हूँ, मैं कुत्ता क्यों हूँ? क्योंकि पिछले जन्म में मैं आश्रम का राष्ट्रपति था और जो मुझे वहाँ पर रिएक्शंस आए, पूरी जिनका नेता था उनसे जितने भी रिएक्शंस आए, क्योंकि उनके प्रति जो भी गलत कार्य करता था उसके कारण कुत्ता बनना पड़ा, तो इसलिए इसको राष्ट्रपति बना। अगले जन्म में देखते हैं क्या बनता है फिर ये। So this is an important lesson for leaders, because in this material world people are fighting to be leaders, fighting to be managers. In most cases they can't lead themselves, they can't manage themselves, but they want to manage the whole world. They are not situated in self-leadership, but they want to lead. They want to be the leader, the global leaders. And then in this way, they get into big trouble before even the next life. This very lifetime, they get into big troubles. तो यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है आधुनिक युग में हम सबके लिए कि आज के समाज में लोग नेता बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, और बहुत बड़ा दायित्व है लीडर या मैनेजर बनना। और हम देखते हैं कि इस तरह से करने से क्या दुष्परिणाम आगे जाके हो सकता है। छोड़िए अगले जन्म का, इसी जीवन में रहते रहते कितनी बड़ी समस्या पूरे संसार के लिए हो सकती है, लीडर मैनेजर अच्छे नहीं होंगे। So, a lesson to learn from here, Prabhupada mentions in one of his purposes in the Bhagavatam that the leader absorbs 1/6 of the sinful reactions of the members of his constituency. तो सॉरी मैं मिस वन पॉइंट, तो महाराज ने भी बताया कि जो लीडर हैं, मैनेजर हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं सकते, अपनी देखभाल कर नहीं सकते, वो लीडर बनना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में बोला कि जो लीडर है बहुत ही जिम्मेदार पोजीशन है, क्योंकि जो भी उनकी प्रजा में है उनमें से कोई भी कुछ गलत कार्य करता है तो उसका 1/6 हिस्सा लीडर के पास जाता है। And who is a leader? Parent is a leader, teacher is a leader, guru is a leader. And so when you take up any position to oversee or to help with as a facilitator of people's services, you are a leader, and you take 1/6 of the sinful reactions of the members of your constituency. तो वास्तव में कौन है एक लीडर या नेता? तो माता पिता हैं, शिक्षक है, गुरु हैं, ये सब नेता हैं। और जब भी वो ये पोजीशन लेते हैं तो जो भी उनके अनुगत हैं, जिनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, चाहे माता पिता हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे गुरु हों, तो प्रजा में जो भी गलत कार्य करते हैं उसका 1/6 हिस्सा गुरु को या इन सब नेताओं को लेना पड़ता है। So it's very important for us to understand the implications of leaders, of being in a position of authority. It's not a gulab jamun. तो इसलिए हमें समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि अथॉरिटी की पोजीशन लेने से पहले, क्योंकि अथॉरिटी की पोजीशन लेना कोई गुलाब जामुन नहीं है। There's so many people in authority,
that I know of in the social setting outside there, they lost their jobs. In some cases, they went to jail. तो मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ समाज में जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहे हैं, परंतु कुछ समय के बाद या तो नौकरी चली गई या फिर जेल पहुंच गए वो लोग. And even the mentality of the people in your constituency, their mentality impact on you, because you may have good intentions, but the mentality of the people around you impact on you and your behavior. और ये भी है कि जो आसपास के लोग हैं उनकी क्या मानसिकता है उसका प्रभाव भी लीडर के ऊपर पड़ता है. हो सकता है लीडर की सोच अच्छी हो, परंतु जो आसपास है उनकी मानसिकता का भी प्रभाव पड़ता है. So this great example is there in the leadership of Lord Ramachandra, and people may even want to emulate that, but the difficulty is having the emotional courage to be able to implement this type of leadership. तो भगवान रामचंद्र के जीवन से शिक्षा मिलती है और लीडर चाह भी सकता है कि मैं भगवान रामचंद्र की तरह एक लीडरशिप रोल अच्छा निभाऊं, परंतु उसके लिए इमोशनल शक्ति की भी आवश्यकता है. So Ram stand for justice and we should stand for justice. तो भगवान रामचंद्र न्याय के साथ रहते थे और हमें भी न्याय के साथ रहना चाहिए. We should not see things falling apart and we close our eyes and say, oh, it doesn't concern me. We should not see things falling apart, going astray, and we say, oh, it doesn't concern me, it's not me, I'm secured. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस फरियाद में बैठा हूँ और सब कुछ सही चल रहा है, आंखें बंद कर लूँ और कुछ भी हो रहा है उससे मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता. ऐसा नहीं है. Srila Prabhupada, okay. Any comments or questions? It's already fast. Time is already far gone. We are beyond our time already. Maybe we should stop here. What do you think? Any comment or question? Yes. कोई प्रश्न है? Hare Krishna Maharaj. Thank you very much for your wonderful realization and living your life according to those guidelines. Maharaj, you tell that 1/6 of the portion is to be taken. But my Gurudev, my mentor, they are so determined to rescue me, to save me, that their fallen soul. But I am so determined that I will go on committing the offenses, no matter what will happen to them. And so, or even asking the questions repeatedly, still I am so determined. So how to save? That's a very important question. Can you interpret? Can you translate that? धन्यवाद महाराज, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने अनुभव का साक्षात्कार को हम सबको बताया और आप ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जैसे आपने बताया. तो महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे गुरु हैं, तो वो तो बहुत दृढ़ निश्चित हैं हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, परंतु हम बहुत दृढ़ निश्चित हैं उनके प्रति अपराध करने के लिए, उनकी आज्ञा ना मानने के लिए. हालांकि बार बार प्रश्न पूछते हैं, उत्तर भी मिलता है, परंतु फिर भी वो दृढ़ निश्चितता उनकी आज्ञा का अवहेलना करने की बनी रहती है. तो क्या करें? Thank you. It's a very insightful question. And there are two things. That's what we call, in research, we have two problems. We have a general problem and we have a specific problem. Now, if it's a general problem, we don't kill ourselves. If it's a specific problem, we try to deal with it. Yes. तो बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है. आप तो दो तरह की समस्याएं होती हैं, एक साधारण समस्या और एक विशेष समस्या. तो साधारण समस्या है वो तो ठीक है, पर विशेष समस्या है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है. But as devotees or aspiring devotees, even the general problem, we try to address it. परंतु क्योंकि हम भक्ति का अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई साधारण समस्या भी हो उसका भी समाधान हमें करना चाहिए. So this is the general problem we find in devotional life.
तो भक्तिमय जीवन में ये साधारण समस्या है जो हम पाते हैं. It's like the Vedic language it mentions, Pashyana pina pashyati, even after seeing, even after hearing, I still do the wrong thing. I make the wrong decisions. I make the wrong choices. तो वैदिक भाषा में इसको बोला जाता है कि देख कर भी देख नहीं पाता, देख कर सुनकर भी उसके बावजूद भी गलत चयन करता हूँ, गलत निर्णय लेता हूँ, गलत कार्य करता हूँ. So first we have to diagnose. We have a problem. We have to diagnose the problem. Someone is sick. We go to see the doctor. The doctor will diagnose us. They will figure out what is the problem. Then they will make a prescription. तो सबसे पहले क्या बीमारी है उसको ढूंढना पड़ेगा. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले हमारी बीमारी ढूंढता है, बीमारी जानता है, उसके बाद फिर दवाई देता है. And what happens here is that we need to understand that there are forces. There are forces pushing us, acting on us, impelling on us, and impacting our behavior and our thought patterns. Those forces are external and internal, or exogenous and endogenous, or extrinsic and intrinsic. तो ये जो भी हम गलत निर्णय कर बैठते हैं, गलत चयन कर बैठते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ शक्तियां हैं जो हमसे कार्य कराती हैं. और दो तरह की शक्तियां हैं, एक बाहरी शक्ति है, एक अंदर की शक्ति है. ये दोनों हमसे कार्य कराती हैं. One of those endogenous or intrinsic factors is hridaya dubalya, weakness of heart. We may have good intentions, and we may even decide that, okay, from today, I must have to chant my 16 rounds before 8 o'clock. Because we know chanting of our japa during the Brahma Muhurta hours gives us the highest benefit. So we do this maybe for 3 days, then we fall back again to the old system of not waking up, and then we struggle with our rounds all through the day, and perhaps in the night we struggle to chant the 16 rounds till 11 o'clock in the night. तो जैसे किसी की भावना अच्छी हो सकती है, अच्छी सोच हो सकती है, परंतु हृदय दुर्बल होता है कई बार. उदाहरण के लिए कोई भक्त आज ही निश्चित करें कि आज से मैं अपनी 16 माला सुबह 8 बजे से पहले करूँगा नियम पूर्वक, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में माला का जप करना अच्छा है. और फिर ऐसा प्रण लेने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन करते हैं, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं, फिर करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर उसके बाद नीचे आके फिर 11 बजे, 12 बजे ऐसे चल रहा है. Or you set up your alarm. You want to wake up at a particular time so that you can be early enough to do your japa before you go out for work or before you go out to school or whatever. And the alarm rang, and you press down the alarm. You dismiss the alarm. It's disturbing me. This alarm is disturbing me. किसी ने अलार्म लगाया है सुबह उठने के लिए कि पहले स्कूल जाने से पहले या वॉक पे जाने से पहले माला करनी है, और फिर जब अलार्म बजता है तो आप एकदम से अलार्म को बंद कर देते हैं कि अलार्म जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. We have the opportunity. Krishna has plan B to be able to wake up. Krishna has provided plan B. We have an alarm. There's a particular term we use in management. So you have the alarm that helps you to remind you about your plan to wake up at a particular time. But even that reminder came, but you ignore it. तो अलार्म अच्छी चीज़ है, जिसे इसको बोलते हैं प्लान बी, कि प्लान ए काम नहीं करेगा, अपने आप उठ जाना काम नहीं करेगा, तो अलार्म के माध्यम से कम उठते हैं, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर. तो इसी तरह हमने कुछ भी निश्चित किया है तो हमारे पास रिमाइंडर होना चाहिए या होता है ताकि वो कार्य संपन्न कर सकें, पर कई बार रिमाइंडर भी काम नहीं करता. So this is a typical case of weakness of heart. तो ये दर्शाता है दुर्बल हृदय. And
it could be reverted, it could be reversed, or it could be purified by strong or powerful devotional association. Devotional association. और ये जो दुर्बल हृदय है इसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है, हृदय को सबल किया जा सकता है बहुत शक्तिशाली दिव्य संग के साथ. It could also be reversed through the process of taking into our system only purified items. Like, for instance, food. If we eat purified food, that helps to nourish our brain cells in such a way that we become light and we become alert to environmental forces, and we are able to act promptly to the agents of change. और एक दूसरा तरीका है कि हम केवल शुद्ध हर सब इंद्रियों के लिए केवल शुद्ध आहार ग्रहण करें. उदाहरण के लिए जो खाना है, अगर हम केवल शुद्ध आहार लेंगे यानी प्रसाद लेंगे तो उससे हमारे ब्रेन सेल्स मजबूत होते हैं और उसके माध्यम से हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि जो हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उसमें सही समय पर सही तरीके से कार्य कर सकें. Another endogenous or intrinsic factor that forces us to act against a better judgment is the endemic lust. और एक ऐसी चीज़ जो हमें वास्तव में जो हमारे अंदर है और हमारे हृदय को और दुर्बल करती है वो है काम वासना. And this is where also, Lord Krishna also addressed this in the Gita. I recited that verse earlier. And basically, the major problem that is confronting humanity is this lust factor, because the lust is so impulsive. People act against their will. Sometimes people even commit crimes. And then they go to the law court, and then they say, I'm guilty with reason. What's the reason? The court will ask. He said, the devil pushed me. There was no devil anywhere. So, this lust is in us, in our blood, radiating. And so, if we are conscious of the fact that, I remember the case of one young lady in America, in a community where I was living. She was a very staunch, very serious devotee. She was an accountant. She was not married. And again, the lust can make us think differently in different things, analyze things in different situations. So this lady, she saw one really handsome, attractive brahmachari. And she said she wants to marry this guy. And the rationale is that she said this is pure love. Pure love. But it's not pure love. You can be attracted to the opposite, to someone for a relationship, and you call it pure love. So the lust is transmuted in different ways and impels us to do things or to say things based on our own promotional analysis, based on how we evaluate things to favor our cause. And so we can even deny ourselves of a high or a pivotal objective based on being pushed by that lost energy to do things that we will regret of in the future. So it's a big problem in the whole world, a really huge problem. And so the laws can be transformed into love by cultivating bhakti meticulously under the guidance of a bona fide spiritual master. तो साधारणतः पूरे संसार में मनुष्य समाज में जो मुख्य कारण है वो है काम वासना. ये काम हमारे व्यक्तित्व में इतना आ गया है, हमारे संस्कारों में इतना आ गया है कि हम इसी से केवल साधारणतः प्रेरित होते हैं. और भगवान गीता में बोलते हैं कि
इच्छा ना होते हुए भी इस काम वासना के कारण गलत कार्य कर बैठते हैं। इतना प्रभावशाली है ये। लोग बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं और जब उनको पकड़ा जाता है, उनसे बोलते हैं आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलते हैं मैंने नहीं किया, मुझसे किसी शैतान ने कार्य कराया। और कोई शैतान तो दिख नहीं रहा, तो वास्तव में शैतान कौन है? ये काम वासना। उदाहरण के लिए एक कोई भक्त हैं, भक्तिन हैं विदेश में, और वो युवती हैं और एक ब्रह्मचारी के प्रति आकर्षित होती हैं। उसके पास आकर बोलती हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और क्यों ऐसा बोल रही हैं? क्योंकि कहती नहीं, ये तो कोई शारीरिक नहीं है, मैं तो केवल शुद्ध प्रेम है इसलिए आपके पास आई हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इस संसार में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो काम वासना है ये हमसे कार्य कराती है और इस तरह में घेर लेती है कि जो हमारा ऊंचा ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता भी है, हम उसकी तरफ जाना भी चाहते हैं, परंतु ऐसे कार्य कर बैठते हैं या ऐसे नीचे खिंचे जाते हैं इसके प्रभाव में। तो इसके लिए, इसके प्रभाव से बचने के लिए जो भक्ति प्रणाली है उसको बहुत मजबूती से हमें करना होगा और एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में और गाइडेंस में रहकर। The other factor that impels us to act in ways that we may not even, that may not be of to our ultimate best interest is the environment. And that is considered an extrinsic factor. But the environment is so powerful. Now, there is even a theory to that effect. This theory was developed by a German psychologist. His name is Professor Lewin. He developed this theory between 1938 and 39. And this is called the field theory, which implies that the environment impacts on our behavior. If you go into a cold room, no matter how many jackets you're putting on, you stay there for some time, the cold will penetrate your body. It will penetrate those your jackets and enter into your body. The environment constitutes of humans, animals, non-moving entities, but they all radiate energies. So depending on the environment, I'll give a typical example. Somebody was very desperate, very eager, coming from a very productive family, well-to-do family, and serious in their studies. Top class, awards here and there. He went to start living in Vrindavan. And the environment engulfed him. All that he wants to do now is Krishna, 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 Krishna. That's the power of environment. तो एक कारण बताया काम जो कि अंदर की स्थिति है, और दूसरा जो प्रभाव करता है वो बाहरी स्थिति, यानी एनवायरनमेंट क्या है, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति है, वो एक बालक है, बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, बहुत अच्छे परिवार से आता है, शुरू से बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है उसको और हमेशा टॉप करता है, बहुत सारे मेडल्स प्राप्त कर लिए हैं, और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वृंदावन पहुंच जाता है। और जब वृंदावन पहुंचता है तो वृंदावन का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ऐसे प्रभाव लाता है कि वो केवल क्या करना चाहता है? कृष्ण 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 करना चाहता है। तो इस तरह एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, उसने 1938-39 में ये एक थ्योरी भी निकाली थी जो ये बताती है कि बाहरी जो परिस्थिति है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर या कैसे कार्य करता है उसके ऊपर। So because the environment radiates specific energies that impact on us, and we've just followed the flow of that environmental energies. एनवायरनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं किसी को? वातावरण, नॉट परिस्थिति, वातावरण। इसलिए जो बाहरी वातावरण है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और वातावरण से शक्तियाँ, environment impacts on our behavior. तो जो वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव के ऊपर। If somebody comes to this temple, whether they like it or not, they get purified, they gain something. So one thing is to be able to convince someone to just come with you to the temple, and they amass a lot of pious credit.
One thing is to just convince someone to go with you 1 weekend to Vrindavan. He might not be a devotee. Just by stepping on Vrindavan, they get a lot of transformation because the environment impacts on our values. तो जो वातावरण है हमारी नैतिकता के ऊपर भी प्रभाव लाता है, हमारे बिहेवियर के प्रभाव लाता है। जिस उदाहरण के लिए कोई इस मंदिर में आ जाए, उस जैसे भी आए, जिस भी भाव से आए, ना भी सोचा हो ना भी चाहो, पर यहाँ पर आते ही उसका शुद्धिकरण होगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता परंतु फिर भी उसको वृंदावन लेके गए तो वृंदावन के वातावरण से बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। So if we want to change our behavior, we acting in ways that we don't like, we should get a chance to stay in a very appropriate environment. We should figure out how to get proper association, strong proper association that fulfills our needs, because the association that we keep determines our future, determines our abilities and capabilities. The person might even be, I remember when I joined as a new devotee in the temple, I remember one day I was speaking with one boy. They are older folks, older devotees in the temple. So I was speaking with this brahmachari, and the temple president, he saw me and he called me, Victor, come here. So I went. And he said, let me not see you stand with that boy anytime. Go about your own business. I was wondering, he's a devotee in your temple. And but later I realized the boy didn't stay. I think the next 1 or 2 months, he blooped, he left. So the person who was there with him, he knows him better. I'm just coming there. So yeah, it works in that way. We have to be careful about what type of association we keep. Association that will uplift our consciousness, not the ones that will deplete us. Not somebody who comes to criticize about every other person around you. I kept a distance with one friend from Canada, very good friend. But each time we meet, he just talks about this devotee, senior devotee, about this. He never talks anything good about anybody. I thought, wow, time to keep a distance from this guy. Because I knew I couldn't change him. He's a matured person. तो इसलिए ये दुर्बल हृदय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, ये हृदय को सुदृढ़ करने के लिए दोनों चीज़ पे काम करें। हम खासतौर पर जो वातावरण है उसके ऊपर कार्य करें, अच्छे वातावरण में रहें और विशेष रूप से बहुत अच्छा संग लें। ऐसा संग जो संग लेने से हम खुद ही आगे बढ़ पाते हैं, वो संग लें। जैसे महाराज बता रहे हैं कि जब मैं युवक था और मैंने मंदिर ज्वाइन किया, नया ब्रह्मचारी था, तो एक बार मैं एक ब्रह्मचारी के साथ खड़ा था और वो ब्रह्मचारी मेरे से सीनियर था, पहले से मंदिर में रहता था। और जो मंदिर का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट, उसने मुझे बुलाया कि तुम वहाँ खड़े थे उसके साथ, अगली बार से उसके साथ नहीं खड़े होगे, मैं तुम्हें देखूँ ना दोबारा उसके साथ खड़े हुए। तो मैं बड़ा आश्चर्य में था कि वो तो मेरे से सीनियर है और ब्रह्मचारी है और मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ, समझ नहीं आया। परंतु 1-2 महीने के बाद ही देखा कि वो जो था ब्रह्मचारी, वो मंदिर छोड़ के, भक्ति छोड़ के चला गया। तो कहने का मतलब है जो अच्छा संग है वही हमें लेना है, वो हमारे लिए प्रभावशाली होगा। And I missed the other part. Okay, so we end there. Let's adjourn this meeting. Srila Prabhupada ki Jai. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Sorry, I had forgotten, I just remembered. The last part of translation. The second boy who was criticizing, Canada friend. और दूसरा महाराज ने बताया कि कनाडा में एक मेरा मित्र था, वो हमेशा सबकी निंदा करता था। मैं जब भी मिलूं, इसकी निंदा उसकी निंदा, तो मैंने उसका संग नहीं किया। इसलिए संग बहुत प्रभावशाली है, तो सही चयन करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हिज भक्ति वसुदेव स्वामी महाराज का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणा देने वाली और बहुत ही शिक्षा देने वाली कथा के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलिनेस भक्ति वसुदेव स्वामी महाराज के, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हृदय गौर प्रेमानंदे। तो अभी से कीर्तन आरंभ हो जाएगा राइट नाउ और प्रोग्राम चलता रहेगा और करीब 10:15
के आसपास अभिषेक आरंभ होगा और विशेष रहेगा आज पुष्प अभिषेक। पुष्प अभिषेक आज भी विशेष रहेगा, कुछ और अधिक विशेष करने का प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग से। तो उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे और भोग ऑफरिंग जब पुष्प अभिषेक के बाद फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे गीता भवन में, कल्चरल प्रोग्राम होगा और फिर उसके बाद 1:30-2 बजे के आसपास प्रसाद होगा। तो महाराज श्री अभी हमारे साथ ही रहने वाले हैं कुछ दिन के लिए, तो आपको मैसेज आते रहेंगे, तो पूरा लाभ उठाइए। महाराज की जब भी कथा होगी आप लाभ उठाइए, यहाँ पर मॉर्निंग में आइए और लेक्चर अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच बोले तो बिल्कुल लग नहीं रहा कि आज हमारा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, बिल्कुल लग नहीं रहा। कोई धूमधाम नहीं है, कोई भक्तों की संख्या नहीं है, कोई भक्तों के हृदय में प्रफुल्लता नहीं है। तो उत्साह के साथ बोलिए कि जो भक्त लोग घर में बैठे हैं उन तक भी मैसेज पहुंच जाए, भी जल्दी आइए जल्दी आइए। यहाँ पे राधा गोविंद देव जी का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, बहुत सारे केक काटते हैं, केक बांटते हैं। चॉकलेट केक भी चॉकलेट क्या होता है, कैरामल क्या बोलते हैं उसको, जो भी कैरामल केक भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तो आज राधा गोविंद का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है फरीदाबाद गोविंद धाम का, जो कि श्री प्रभुपाद की कृपा से, गुरु कृपा से प्रकट हुआ है। तो उत्साह रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूट्यूब जो भक्त देख रहे हैं प्लीज आप यूट्यूब पे मत रहिए, यूट्यूब आज ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल बैन कर देंगे यूट्यूब। प्लीज घर से यहाँ पर आइए और जल्दी आइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो वैसे डीटीज का अभिषेक हो तो जनरली फास्टिंग होता है, परंतु फिर भी प्रसाद भी है। अभी मॉर्निंग में आप जाएंगे जल्दी से गीता भवन में, आप प्रसाद पा सकते हैं जो भी वक्त पाना चाहते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद क्लीनिंग इत्यादि की जाएगी ताकि आगे के प्रोग्राम की व्यवस्था की जा सके। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,